Today we will do something in writing. Okay, so you keep your copies and your pen beside you, and as I write the letter, you will write it. This is the assignment. I will ask you to upload this letter on the Snap homework, and I will check it. This will. मैम हाँ बोलो अमन. मैम ये देखिए अमन कुमार सिंह 2 बच्चा है क्या, देखिए तो मैम. चल रुको देखना. यस मैम है तो. एक वेटिंग रूम में है. नो मैम एक नो मैम है, दो तो है. अमन कुमार सिंह 10D32 एडमिशन नंबर कुछ करके, और एक मेरे और एक और है मैम. हाँ एक अमन कुमार सिंह अभी वेटिंग रूम में है. एक तुम तो अंदर आए हो, एक वेटिंग रूम में है. उसको ज्वाइन नहीं करने देंगे. फिर फेक है क्या? एक दो है मैम. हाँ मैम 2 दिखा रहा है. 2 दिखा रहा है. मैम चला गया. चला गया ना. Okay. As I write the letter of inquiry का एक sample letter लिखवा देते हैं. You have to write it in your copies, and later on you have to upload it. This will be your assignment. You have to upload it on Snap homework, and I will check it. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. So this Yes, is ma'am. letter of inquiry. Question is, as I told you, in CBSE, question will always be given. As I told you in CBSE, question will always be given. So the question is, you are Rajni Rahul. This is an inquiry letter. इंक्वायरी लेटर मतलब किसी भी चीज का जानकारी. ग्रीन पेन दब गया. किसी भी चीज का जानकारी लेने के लिए जो लेटर लिखाता है वो होता है इंक्वायरी लेटर. सो यू आर राज ऑब्लिक राहुल, लिविंग एट E9, लिविंग एट, क्या दे दे कोई भी एड्रेस, PC कॉलोनी, कंकड़बाग. You read an advertisement, मतलब तुमने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा एक कंप्यूटर कोर्स के बारे में. You read an advertisement about a computer programming course. About a course of computer programming. By Z Computers. Z Computer is the name of the institution which provides the training. By Z Computers. Khajpura, Patna. Write a letter. So when you do the letter writing, the word limit is 100 to 150 words. Letter is written very briefly, just the matter. So minimum 100, maximum 150 words. Seeking all the relevant information. Information about the course.
You keep your copy and pen and then you write the letter so that it will be easy राज for और राहुल दोनों में से कोई भी ना? क्या? मैम आप जैसे लिखी यू आर राज और राहुल, तो हाँ, मैम तो एक लड़के का एक लड़की का ना होता है। अच्छा, सॉरी, रजनी था, रजनी लिखना था मुझे। वेट, आई इरेज एंड राइट इट। सॉरी, रजनी। हाँ, एक girls will write Rajni and boys will write Raj. So as I told you, inquiry letter is the letter in which you want information about something. So format is the same as in all the formal letters. Address था हमारा PC Colony Kankadbagh, and sender's address is written in very short. 2 lines are enough. This is enough. No need to write a big detailed address. After that, you leave one line. As I told you, the date should be today's 27. One thing you have again and again I'm telling you, the month should always be written in words. 2020. Then you leave one line. The director designation कुछ भी, फिर Z computers, Z computers के डायरेक्टर को लेटर लिखना है तुमको, डेजिग्नेशन और उसका ये एड्रेस दोनों सेंडर्स और रिसीवर both address will be given in the question paper, so you don't have to apply your brain in that. Don't write your own address over there. Always the address will be given. Sir, सर मैडम ऑब्लिक करके, तुमको पता नहीं है कि वो डायरेक्टर जो है वो मेल है या फीमेल है, तो सर ऑब्लिक मैडम लिख सकते हो। अगर पता है फॉर श्योर तब whatever it is, if he is a male, sir, if he is a, then subject to inquire and to inquire about computer course. This is the subject. Then you'll begin the letter. I came across, मतलब तुमको ये जो जानकारी मिली कोर्स के बारे में वो न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट से मिला, तो यू कैन मेंशन देन आई केम अक्रॉस एन एडवर्टाइजमेंट in the Hindustan Times about a computer programming course offered by your institution. Offered by your institution. Then you will give your short introduction कि तुम किस क्लास में पढ़ते हो. I've just passed my class 12. I've just taken my class 12 examination. I've just taken my class 12 examination.
and I'm interested in joining this course. All of you, you write the letter with me, because you have to maintain a copy for writing and grammar. Writing and grammar to revise during the time of exam, so that you can just go through all the letters, the format, how you have to begin the letter. So I came across an advertisement in the Hindustan Times about a computer programming course offered by your institution. I've just taken my class 12 examination and I'm interested in joining this course. Then you will change the paragraph. I will be much obliged. You have to, the language has to be very polite. If you send me the details, send me the details about this course. Send me the following, sorry. ये सब डिटेल्स तुमको चाहिए उस कोर्स के बारे में. The following details about the course. Just as when you are writing in letter of order, I had told you to make a table, and to make a table and write it. It looks very neat. So similarly, when you want to get information, you can put the numbering. कौन सा information तुमको चाहिए? Number 1 venue, number 2 duration, number 3. So so you can just, as I told you, when writing letter for order, you have to make a table, but here you don't have to make a table. You can just put the numbering 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हो, या सिर्फ bullets ऐसे दे के लिख सकते हो, whatever is. But if you write one below the other instead of paragraph form, if you just write it one below the other, that looks more neat. So what are the information that you want? Number 1, you want to know the duration of the course. You want to know the duration of the course. So you can just put the numbering properly, and then number 1, you want to know the duration of the course. मतलब कितने महीने का कोर्स है. Duration of the course. Then number 2, the fee structure. कितना फीस लगेगा पूरे कोर्स का. Fee structure and timing. कोर्स का टाइमिंग क्या है? Fee structure and timing. Then
You want to know the eligibility criteria, 10th pass, 12th pass, eligibility criteria. You understand eligibility criteria? Hello, do you understand what is eligibility criteria? Yes, ma'am. हर कोर्स के लिए एक एलिजिबिलिटी होता है कि इस कोर्स को 10th पास कर सकते हैं, 12th पास कर सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग के लिए होता है ना एलिजिबिलिटी 12th पास या 12th अपीयरिंग, तो कोर्स के लिए भी रहता है कुछ एलिजिबिलिटी। अब 8th पास को तो नहीं कंप्यूटर कोर्स में ले सकते, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हु आर द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ बैच। बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है तो उसमें भी प्रॉब्लम। फिर ये भी लिख सकते हो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो है वो अपना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देते हैं, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज then और भी पूछ सकते हो कि whether it is recognized by the university or not। कोई जो है रिकॉग्नाइज्ड जगह से कोर्स करने से उसका ज्यादा वैल्यू होता है। जैसे हमारा स्कूल है तो वो एफिलिएटेड है सीबीएसई से, इसीलिए पेरेंट्स जो है वो आंख मूंद के डालते हैं। those schools which are not affiliated, their value is not that much। so whether it is recognized तो ये सब कोई भी कोर्स है तो इस उसमें ये सब बहुत सारा चीज कॉमन रहता है। और किसी भी कोर्स का इंक्वायरी करना तो दीज आर द थिंग्स विच आर कॉमन। और फ्यूचर, फिर ये भी पूछ सकते हो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कोर्स। बहुत सारा दे दिए कि चलो कुछ भूल भी जाओगे तो इसमें से 3 4 तो 5 तो कम से कम लिखना होगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मतलब हम ये कोर्स करेंगे तो किस तरह का जॉब हमको लग सकता है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट after completing the course, what kind of jobs you can get after completing the course. All of you are writing it in your notebooks? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, it will be beneficial for you only. You can revise it at the time of exam. Many things get slipped out, no? So exam time, if everything is at one place, you can just this also when you are inquiring for the course, you can write this, that please send me a copy of the prospectus। किसी भी कोर्स या ये कर रहा था तो प्रोस्पेक्टस रहता है, उसमें उस इंस्टीट्यूट का जितना भी कोर्स है सारा डिटेल्स उसमें रहता है। प्लीज सेंड मी द प्रोस्पेक्टस of the course so that I can get all the information। So this you can write, one line you can add, looking forward to your quick response कि मतलब आप looking forward for your quick response, that I hope you will respond quickly। इसका मतलब है कि I hope you will send all these details, looking forward for your quick response। Means I hope that you will send all this information
as early as possible. लैंग्वेज में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है, हम ये एक सैंपल दिए, तुम और भी लिख सकते हो. Kindly send the information as early as possible. This also you can write. There is flexibility. This is just one sample that I'm giving you. And then you can write in the end, yours faithfully. One thing, don't put an apostrophe. ऐसे नहीं डालना, ये गलत है, ठीक है ना. yours में apostrophe नहीं रहेगा इसको. So yours, there will be no apostrophe s. Yours faithfully, नाम जो भी है, रजनी. This is the how you have to write an enquiry letter. It will be better if you write all the details one below the other, numbering it. You can number 1, 2, 3, 4 bullets. You can put whatever. It looks neat, and so it's clear how to write letter of inquiry. Yes, ma'am. Okay. फिर कंप्लेंट लेटर एक टाइम. कंप्लेंट लेटर एक स्टार्ट कर देते हैं और जो रहेगा अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे. So what are the points that you should remember in writing a complaint letter? कंप्लेंट लेटर जो है वो किसी भी चीज का कंप्लेन करने के लिए ही यूज होता है. इट कैन बी एनीथिंग, either about some environmental problem, और तुमने कुछ सामान खरीदा वो खराब निकल गया कुछ दिन बाद, या तुमने कोई सामान मंगवाया वो डिफेक्टिव निकल गया. तो कंप्लेंट लेटर can be of any time. So what are the some of the useful language, आज sample नहीं लिखवाते हैं, some useful expressions that you can write use in writing a complaint letter. तो complaint letter में ये सब हम expressions use कर सकते हैं. We regret to inform you. When you are writing a complaint letter, you are facing some problem, so that is why this can be used. We regret to inform you. और ये सब ये भी लिख सकते हो, I wish to complain about. or you can write we are sorry to, I'm sorry to inform you, ये भी लिख सकते हो. So these are some of the things by which you can जैसे कि लेटर टू एडिटर तो एक फिक्स्ड ये है स्टार्ट करने का कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम डेली. So if you know how to begin different kinds of letters, it will be easy for you. So these are the expressions you can use in complaint letter. That उसके बाद जो तुमको मैटर लिखना है वो. हाँ. So and what are the things that you should keep in mind? My voice is audible to all of you? Hello? Yes. Hello? Yes, ma'am. All these details you note it down in your copy. Yes, ma'am. So in complaint letter you have to describe your opinion very clearly. Describe your opinion very clearly. Why? Because जिसको भी तुम कंप्लेन लिख रहे हो उसको पता लगना चाहिए कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है. Describe your complaint
वेरी क्लियरली एग्जैक्ट। जैसे अगर वॉशिंग मशीन खराब है तो क्या खराब है, आवाज आती है, अपने से बंद हो जाता है। टीवी खराब है तो उसमें क्या गड़बड़ी है, पिक्चर गायब हो जाता है, रफ वॉइस निकलता है। तो यू हैव टू डिस्क्राइब योर कंप्लेंट very clearly so that the person, that the shopkeeper, if he reads the letter, he will come to know exactly what your problem is. Then what you would like the receiver to do. तुम अगले से क्या expect करते हो? हाँ, तुम लिखते हो ना कि either replace or repair, या अगर कोई authority को लिखते हो, suppose you are writing to the SP about the increasing crime in your locality. You will also write what you expect from the SP. But kindly look into the matter and kindly look into the matter. Police patrolling should be increased in our area. So you have to also write in your complaint letter that what you expect from the person. तुम्हारा ये complaint है और तुम्हारा expectation क्या है receiver से. So second thing, to what you would like, what response you expect from the receiver. What response you expect from the receiver. Example means like जैसे कोई गैजेट खराब होता है तो either repair or replace लिखते हो ना, तो that is your expectation. Then mention your next course of action. तो ये भी mention कर सकते हो. ये ऑप्शनल है, मेंशन कर सकते हो कि अगर मेरा ये नहीं ठीक किया गया तो हम कंज्यूमर फोरम में जाएंगे. ये ऑप्शनल है. mention your next course of action if the complaint is not solved. ये थोड़ा लेटर को इम्पोलाइट बना देता है, लेकिन if your complaint is not solved, is not attended. So even if you are writing this one, your next course of action, don't be very rude. You can write in polite language कि अगर मेरा सामान ठीक नहीं हुआ तो हम अगला step ये ले सकते हैं. So that you can mention, or it's not necessary. So these are the things that you have to keep in mind while writing a complaint letter. You can use these kinds of line to begin. We regret to inform you that the washing machine that I purchased from your shop last week has stopped functioning. फिर क्या-क्या ये जो. So, okay. It's clear to all of you. So your homework is to upload this letter. I'm not giving any extra homework because I know you have scarcity of time. You have to prepare for all the other subjects also. So you just have, your homework is you have to upload this very letter. Whatever is written in the class, you just have to upload that on Snap Homework. And I will see and I will put a tick or grade, whatever it is. So bye all of you. Our class ends here. मैम स्नैप होमवर्क पे करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में कर देंगे? स्नैप होमवर्क पे ज्यादा आसान रहता है मुझे चेक करना. ओके मैम. स्नैप होमवर्क पे कर देना.
Okay, उसमें ma'am. ग्रेड्स का भी ये है, ऑप्शन है। फिर हमको थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, अभी टर्मिनल्स का वहीं से इवैल्यूएशन करना है, तो it would be better if you upload it on Snap Homework। वैसे ग्रुप में भी आएगा तो मैं देख ही लूंगी। Okay, ma'am. ओके, ओके, बाय ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. ओके, बाय। Bye, ma'am.